फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपके आईपीओ के लिए शानिल जी। तो अगर आप कंपनी के बिजनेस मॉडल, इसके प्रोडक्ट्स वगैरह को थोड़ा सरल शब्दों में बता पाएं तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी स्टार्ट होगी। जी। श्योर सर। सर आप, हमारा कोर बिजनेस मिनरल बेस्ड फार्मा एक्सिपिएंट्स और फूड न्यूट्रा इंग्रेडिएंट्स का है। जब मैं मिनरल बेस्ड कहता हूं तो हम लोग 6 मिनरल से काम करते हैं: कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सोडियम, पोटेशियम। आप कोई भी एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए सर। आप कोई भी, जब कोविड था तो लोग जिंक सप्लीमेंट खाते थे, राइट? अभी आप अगर आप कोई भी एनर्जी ड्रिंक लेते हो, प्रोटीन पाउडर लेते हो, तो उसको सभी में जब पीछे का लेबल देखते हो तो उसमें लिखा होता है कि इतने इतने अंदर मिनरल्स और इतने विटामिन अंदर ऐड किए हुए हैं फॉर पीपल्स न्यूट्रिशन। एंड दैट इज आवर बिजनेस। हमारा बिजनेस है इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर करना एंड मेकिंग देम कंपैटिबल विद डिफरेंट एप्लीकेशंस। या वेदर इज अ टैबलेट, इन्फेंट के लिए इन्फेंट फॉर्मूला है, एनर्जी ड्रिंक है, या प्रोटीन पाउडर है, मल्टीपल एप्लीकेशंस में वी सप्लाई cater to, and our USP or our strength is the chemistry behind manufacturing these minerals for various applications. ओके। और इन्हीं को एक्सिपिएंट्स बोलते हैं जो आपका मेन प्रोडक्ट है शायद। करेक्ट सर। जब वो फार्मा के लिए जाता है सर, तो उसमें वो एक्सिपेंट कहलाता है सर। एक्सिपेंट बेसिकली जब आप टैबलेट खाते हैं तो टैबलेट में मेजोरिटी जो वेट से कंट्रीब्यूशन होता है वो एक्सिपेंट का होता है। एपीआई का वेट कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, पर वो डिजीज क्योर करता है आपका। अगर आपको बुखार आ रहा है, आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, तो पैरासीटामोल का वजन टैबलेट के अंदर बहुत कम रहता है। मेजोरिटी अंदर जो जो दूसरा सब जाता है वो एक्सिपेंट कहते हैं। एक्सिपेंट कंट्रोल करता है टैबलेट का बेसिक शेप साइज, पर ज्यादा मोर इम्पोर्टेंटली वंस यू कंज्यूम द टैबलेट इन द बॉडी, कहाँ पे जाके वो डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, कितना फास्ट डिजॉल्व होना चाहिए। आपको बुखार आ रहा है, आपको जल्दी इफेक्ट चाहिए, आपको ब्लड प्रेशर का दवाई है, आपको 24 घंटे में इफेक्ट चाहिए, वो सब कुछ कंट्रोल एक्सिपेंट करता है। तो आवर प्रोडक्ट्स आर लो इन कॉस्ट कंट्रीब्यूशन बट वेरी हाई इन फंक्शनल वैल्यू। ओके। और ये, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, मुझे आपसे पूछना चाहिए आपके लिस्टेड पीयर्स कौन है इस बिजनेस के अंदर। आपने आरएचपी में लिखा है आपके कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है, सो मे बी ऑन अ होल आपके कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली हर बिजनेस के लिए। जी सर आई थिंक अगेन आप देखेंगे तो इंडिया में देर इज नो डायरेक्ट पीयर कंपेटिटर हमारे लिए फॉर सुदीप। एंड सर ये दिस एक्चुअली इज बिकॉज हमारा बिजनेस का फिलोसफी स्ट्रेटेजी वो रहा है कि हम लोग यूजुअली और 90% टाइम्स वी फोकस ऑन अमेरिकन एंड यूरोपियन कंपनीज। उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम लोग स्टडी करते हैं, उनका टेक्नोलॉजी क्या है वो स्टडी करते हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल क्या है वो स्टडी करते हैं। एंड हमारा पूरा जो R&D हो रहा है इंडिया में, वो उस दैट इज फोकस्ड ऑन मेकिंग प्रोडक्ट्स जो प्रिडोमिनेटली अमेरिकन और यूरोपियंस बनाते हैं, ज्यादातर इंडिया और चाइनीज कंपनी नहीं बनाते। तो विच इज वाई लिस्टेड स्पेस में देयर इज अ कंपनी कॉल्ड बॉलकेम इन द यूएस। दैट वुड बी अ क्लोज और बहुत बड़ा कंपनी है। वी विश टू compete अगेंस्ट देम। तो यूरोप और यूएस में काफी कुछ peers है। Unfortunately, in India, or there are no direct peers or competitors for the business. वॉल कैम्प कॉर्प। ओके, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ग्रेट। आपका फार्मा के अलावा भी कुछ बिजनेस है शायद, बैटरी से रिलेटेड भी कुछ है, थोड़ा उसके Yes. विषय में भी बताएं। Sure. Sir, so for battery, through our wholly owned subsidiary Sudeep Advanced Materials, हम लोग बनाएंगे बैटरी ग्रेड आयरन फॉस्फेट। आयरन फॉस्फेट एक क्रिटिकल कंपोनेंट है फॉर लिथियम आयन बैटरी। और लिथियम आयन बैटरी का यूज दो दो मेन एप्लीकेशन में है। एक तो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सेकंड है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो एनर्जी स्टोरेज में 100% बैटरी का डिमांड लिथियम बैटरी का होता है। एंड लिथियम बैटरी में आपको एक लिथियम चाहिए और आयरन फॉस्फेट चाहिए। तो सुदीप टुडे इज द ओनली कंपनी आउटसाइड ऑफ चाइना ग्लोबली जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, जिसने सक्सेसफुली ये बैटरी ग्रेड प्रोडक्ट डेवलप करके कमर्शियलाइज किया हुआ है।
एंड ये वी वर एबल टू डू दिस बिकॉज हमारा ये आयरन फॉस्फेट जो प्रोडक्ट है वो हम 10 साल से बना रहे हैं फॉर अ न्यूट्रिशन एप्लीकेशन एज एन आयरन सप्लीमेंट। तो उसका 10 साल का हम लोग एक्सपीरियंस लेके प्रोसेस इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो उसको इस्तेमाल करके हम लोग ने ये बैटरी ग्रेड प्रोडक्ट डेवलप किया है। ओके, तो इसके कमर्शियलाइजेशन में हम अभी कौन सी स्टेज पे हैं? Sir, currently we have a pilot plant which is up and running for the battery grade product. हमारा जो existing plant है उसमें भी हम लोग ने commercial trials दिए, successful trials दिए हुए हैं। And अभी currently we are working on a greenfield project which will be coming up in Gujarat as well. But उसको it will take around 18 months for that project to get commissioned, and then we will have capacities come live for battery grade iron phosphate. ओके, और इस डायरेक्शन में कोई आपने कमर्शियल अग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए हैं अभी? आर देयर एनी कस्टमर्स? Sir, I think again from what I can share is कि if जो हमारे 3-4 मेन कोर फोकस मार्केट्स है, यूएस है, यूरोप, कोरिया, जापान एंड इंडिया। दीज आर द मार्केट्स which where we are currently focused, and we are currently very actively working with majority of the customers across all these markets on getting our product approved, or it has already gotten approved. Maybe just one more thing to add, sir. In some countries, including the US, वहाँ पे regulatory requirement हो गया है अभी to have a supply chain which is ex China. उसको FEOC बोलते हैं, Foreign Entity of Concern and Prohibited Foreign Entity. तो जो कंट्रीज ये दो लिस्ट में आती है, अगर वहां से सप्लाई चेन जाता है यूएस में, तो यूएस कंपनीज बिकम इनएलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट इंसेंटिव दैट दे टिपिकली वुड रिसीव। So Right. because of this regulation, Sudeep becomes a huge beneficiary कि अगर किसी को भी एक्स चाइना सप्लाई चेन चाहिए, तो स्पेसिफिकली फॉर बैटरी ग्रेड आयरन फॉस्फेट टुडे वी आर द ओनली कंपनी ग्लोबली आउटसाइड ऑफ चाइना जिसके पास एक रेडिली अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, एंड दैट इज द यूनिक अपॉर्चुनिटी वी हैव, एंड जिसके तरफ हम लोग बहुत एक्टिवली फोकस और काम कर रहे हैं। ओके, ये टेक्नोलॉजी आप कह रहे हैं कि चाइना के बाहर सिर्फ आपकी कंपनी के पास है पूरी दुनिया में। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि काफी टॉल क्लेम है, और आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही ही होंगे, लेकिन आपको ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने में कितना टाइम लगा, कितने एफर्ट्स लगे? Sir, so I'll answer this in two parts, sir. आप देखोगे तो when I say कि we are the only ones, I say we are the only ones जिन्होंने बैटरी ग्रेड प्रोडक्ट सक्सेसफुली डेवलप करके कमर्शियलाइज किया है, राइट? ये प्रोडक्ट आयरन फॉस्फेट जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग एप्लीकेशन में जाता है, और वो प्रोडक्ट मल्टीपल लोग बनाते हैं ग्लोबली। ये प्रोडक्ट सो चाइना ऑफ कोर्स चाइना के पास काफी कुछ पैटर्न थे, तो उन्होंने 2022 तक ये पूरे कैटेगरी पे दे वर डोमिनेंट इन दिस कैटेगरी। उसके बाद आपने देखा होगा सर, इंडिया में भी बहुत सारी कंपनी ने बैटरी मटेरियल्स को लेके अनाउंसमेंट्स किए हैं, बट एवरीवन इज फोकसिंग ऑन फर्दर डाउन द वैल्यू चेन। जो आयरन फॉस्फेट है वो स्पेसिफिकली टुडे नो वन हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड and does not have a product जो commercially available है, so that is the edge we have. Definitely there will be competition going forward, sir. उसमें there is no denying, but we will have a advantage in that because हम लोग 10 साल से प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंड जो बैटरी ग्रेड प्रोडक्ट है उसको हम लोगों ने 2018 से शुरू किया था। इट हैज टेकन अस 7 years टू डेवलप दिस प्रोडक्ट। ओके, राइट, परफेक्ट, ठीक है। ये तो काफी अच्छी चीज है। बैटरी प्रोडक्ट्स, इनकी रिक्वायरमेंट जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी काफी रिक्वायरमेंट है इनकी। आजकल तो करीब करीब हर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर बैटरी आ रही है, और मोस्टली लिथियम बैटरीज हैं। लिथियम केमिस्ट्री के अंदर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है, लिथियम आयरन फॉस्फेट। करेक्ट सर। राइट, ओके, ग्रेट। सर, थोड़ा सा हम बात करते हैं, आपके आरएचपी को मैं देख रहा था। सो आपकी जो एट्रिशन रेट है एम्प्लॉइज की, वो काफी हाई दिखी मुझे। सो यहाँ पे मैं कहूँ आपके आरएचपी का ही मैं बताना चाहूंगा। FY23 में एट्रिशन रेट वाज अमंग परमानेंट पीपल, परमानेंट एम्प्लॉइज 26%,
वो बढ़ के 27 हो गई अगले साल, और उसके अगले साल ये बढ़ के 30% हो गई, 30%। सो ये काफी हाई है फॉर अ हाई बेस ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज। सो इसके पीछे कुछ रीजंस? Sir, I think if you see, I think unfortunately there is no breakup in terms of, at what stage these people are. But if you historically in our business, हमारा जो 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 सीनियर मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, लीडरशिप टीम है, दोज आर पीपल हु आर वेरी लॉन्ग टर्म इन द बिजनेस, वेरी स्टेबल इन द बिजनेस. दिस इज यूजुअली जो फ्रेशर निकलते हैं फ्रॉम कॉलेज who are looking for a first year opportunity to gain some experience. That is the maximum churn जो हम लोग that we face in the business, and that is evident because usually we try and give opportunity to as many new people to come and gain exposure, not necessarily add much value to the business because they are fresh out of their education. But whether it's R&D, whether it's engineering and production, these are three, and quality, these are four verticals where we do majority of the recruitment of of people who are fresh out of college, and that is typically the people that after 1-2 years will eventually move on. ओके, इससे आप कोई लॉन्ग टर्म में बिजनेस पे कोई खतरा नहीं देख रहे हैं? कोई रिस्क नहीं है इससे? Sir, not necessarily, because as I said, the core team at Sudeep, or the senior team at Sudeep has been with us for a very long time. On average, I think 7 to 10 years is the tenure of the senior core team that we have at Sudeep. And therefore, I think that this is how our business has been run for a very long time, and we've continued to be able to sustain the growth and the margin, and to constantly invest in R&D. And ये जो नीचे के लेवल में जो churn होता है, that has not adversely impacted the business. Again, having said that, is it something that we would look to focus on? Most definitely. But it is also a little bit part of how the business operates, because we take on more people just from a giving back perspective, that people should have the opportunity to come and learn. Got it. Fair enough. लेटेस्ट क्वार्टर जो हुआ अभी, जून क्वार्टर, जिसके नंबर्स आपने प्रेजेंट किए हैं आरएचपी में, इसमें आपके ट्रेड रिसीवेबल्स काफी शार्पली इंक्रीज हुए हैं, 150% इंक्रीज एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू. स्पेसिफिक टर्म्स में बात करें तो ऑलमोस्ट जो पिछले साल के आपके ट्रेड रिसीवेबल थे वही अभी भी हैं इसी क्वार्टर में. सो ये थोड़ा अलार्मिंग भी है, क्योंकि बेसिकली आपके क्लाइंट्स पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं, राइट? Sir, if you see, so how our business is structured, and this will be a surprise to a lot of people, and when we share that हमारे जितने भी बड़े कस्टमर है, राइट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वेरी लार्ज, probably the largest FMCG companies, nutrition companies, infant formula companies, pharma companies, typical trade terms, payment terms are anywhere between 120 to 180 days. That is the standard payment terms that we operate on. Some of the very large customers with whom we have a global relationship or global partnership, payment terms are 180 days. And that is part of their global sourcing policy, that if you want to become a global supplier, and that is one of the reasons why our business has grown a lot, because some very critical customers Sudeep is probably the only Indian company to be a global supplier, along with other European and American companies. तो वहाँ 180 days का payment term रहता है, sir. So as the growth in those customers continues, that is what is partially impacting the receivable cycle. Second thing, sir, that has changed the dynamic a little bit, and that would be a temporary phenomena, is we have set up our sales team in Europe and the US over the past 12 months, including warehousing capabilities. So हमने काफी कुछ countries में warehousing capability develop किया to support our sales team, and to now looking at the next phase of growth in Sudeep. So because of that, there is certain inventory buildup that has happened across all these warehouses, almost 15 globally.
And over the next few quarters, as the rotation of the sales begin, that should also help normalize the overall working capital cycle. ओके। हम्म। लेकिन मोटा मोटी बात ये निकल रही है कि जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा और कस्टमर्स भी आप ऐड करेंगे, तो ये इन्वेंट्री आपका जो डेज आउटस्टैंडिंग रहने वाला है, ये मोटा मोटा इसी लेवल पे रहेगा, या Sir, इसमें कुछ सुधार देखते हैं आप? नहीं सर, आई थिंक देयर विल बी सम चेंज. आई थिंक इन्वेंट्री विल डेफिनेटली गो डाउन एज आई मेंशन. जो हमारा जो अभी करंट जो पिछले 6 महीने में काफी कुछ स्टॉक बिल्डअप हुआ है अक्रॉस ज्योग्राफीज एंड वेयर हाउसेज, दैट विल स्टार्ट टू नॉर्मलाइज. आई थिंक No, हमारा जो inventory I can understand, but सॉरी sorry to cut you in between. So inventory part is okay, I understand. आप किसी भी नई ज्योग्राफी में एक्सपेंड करते हैं तो इन्वेंट्री आपको रखनी पड़ती है, तो दैट इज ओके. बट जो आपका ट्रेड रिसीवेबल्स है, दैट बिकम्स ओनली आफ्टर बिलिंग, राइट? आपने क्लाइंट को बिल कर दिया है, आपने मोस्ट प्रोबेबली सामान डिलीवर भी कर दिया है, वो हो सकता है ट्रांजिट में हो सकता है डिलीवर्ड हो, एंड लेकिन आपको पेमेंट अभी नहीं मिली है. Correct, sir. Typically, वो receivable cycle will remain in that 130 to 140 day bracket going forward, and that is part of our business model, and that is also reflected in the margins that we generate for the business. करेक्ट, नो वरीज. ओके. अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि लाइक अगले 5 साल में आप इस बिजनेस को कहाँ जाते हुए देखते हैं. मैं आपसे कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ भी क्वालिटेटिव टर्म्स में अगर आप बता सकें कि अगले 5 साल में सुदीप में ये होने वाला है, इस तरीके से कंपनी चेंज होने वाली है. आपकी कंपनी वैसे ही काफी यूनिक है, देयर आर नो लिस्टेड पीयर्स, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस क्वालिटी, जो कुछ भी आप ऐड कर सकें. एंड फाइनली, इन्वेस्टर्स को इसके अंदर पैसा क्यों लगाना चाहिए? लाइक मैं अपनी बात करूं तो मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करूं? Sure. That's a great question, Anilji. So I think I will answer this in 3 or 4 parts. So let's look at each business vertical. So I'll start with specialty ingredients. This is the business vertical which we introduced in FY22. So again, this is the technology focused business we have, जहाँ पे हम लोगों ने 6 proprietary technologies develop की है indigenously. So these are not licensed technologies. IP is with Sudeep, and again competition is predominantly US and some competition from Europe. Now आप ये business को देखेंगे sir, तो it has grown from zero to today contributing almost a third in terms of revenue to Sudeep Pharma, right? So approximately 160-170 crores this category is generating. It has grown over the past 2-3 years at I think around 30%, just over 30% CAGR. And the kind of R&D pipeline that we have, the kind of projects we have, and because it's a highly customized business, approval cycles take longer. But once the approval comes, the sales growth is quite fast and becomes very sticky in nature because उसमें like to like product जल्दी available नहीं होता है. So that we believe that specialty ingredients we should be able to maintain this growth momentum for the next couple of years. So that should give you some visibility on a third of the business, how that a third of the business will grow. Second, talking about our core business, which is pharma food nutrition. That is the one that was maybe not growing at 30%, was growing at maybe a baseline of 10-12%. However, what we have done there is, if you see our capacity, our manufacturing plant 1, which is the largest plant we have in the pharma segment, is operating close to optimum utilization. So for us, while installed capacity could be higher, optimum utilization is typically around 70%. And because of how customized and batch processed our ingredients are. So we have this new capacity coming live end of this financial year, which will add 50,000 tons of capacity. And if you see, if you look at the RHP, we have approximately 110 crores currently in CWIP. And if you look at our historical asset turn, approximately वो 3x के आसपास रहा है. And the 110 crores is, I would say 90% of the project is complete. The remaining residual capex will be done in the next couple of months, and by March we will commission the project.
So that should give you visibility in terms of how the new project will also contribute to the revenue for the core pharma food nutrition business, specialty ingredient business which we spoke about. Thirds are very important, which is not part of our document or not consolidated yet. Is the acquisition we've done earlier this year in Ireland. Now this is a very strategic acquisition that we have done. Our within the nutrition industry, our core focus remains on infant nutrition. Again, part of business philosophy, we want to operate in the most critical segments where our products also play a critical role. तो उसमें क्या होता है कि initial periods are longer, but once you are approved, that industry becomes a barrier to entry for majority of the competition to penetrate because they don't have the expertise to enter because either technology नहीं है, purity उनके ingredients में purity नहीं है, and customer itself takes 5 to 7 years to give the approval. So through this acquisition, what we've done is we've further strengthened our positioning and offering in the infant formula market. This company NSS in Ireland, वो 40 years से business में है, only focused on infant nutrition market. Again, they have all the marquee names as their customers, as we do at Sudeep. We have disclosed, we have Danone mentioned in our document, which is again a very large global leading infant formula company. And through this acquisition, we have acquired basically several customer approvals. We have acquired proprietary formulations, and we've acquired a domestic manufacturing site which has gone through all the approvals already. So typically, it would have taken us 5 to 7 years if we were to start independently, which we have time to market, we have cut short. Even though the company operates in Europe, they operate with very similar gross and EBITDA margins as our current business. So it would not be margin dilutive in nature. So that's the third vertical. So you will see the 10 months of sales getting consolidated in this year's annual revenue. And then fourth, lastly, which is maybe I would not say short term, but more on the mid-term in terms of giving you visibility over a 3-year period, is the focus we have on the battery materials ecosystem. Again, having that 10-year of head start to make battery grade iron phosphate and the kind of engagement we have across multiple key geographies gives us a lot of confidence that there will be it will position Sudeep very strongly to kind of operate in the lithium iron phosphate category and becoming a dominant supplier outside of and giving customers an ex-China supply chain. As I said, that project will still be 18 months out, but once the project is commissioned, that will also become a significant growth driver for the business going forward. Great, wonderful. So let's spend some time on this NSS acquisition. ये Sure. आपकी टोटल रेवेन्यूज में करीब कितना कंट्रीब्यूट करेगा एनुअल बेसिस पे? Sir, I think unfortunately that data point is not part of the document. But what I can share is they currently have 7,500 tons of capacity. Around 40% is utilized, so significant opportunities available. They are, as I said, it's a highly profitable business, both from a gross and EBITDA margin perspective. And I think you will in Q1 numbers, it has contributed insignificant contribution because we acquired the business in May. तो सिर्फ जून का हमने कंसोलिडेशन किया, but I think post listing when we announced the Q2 and H1 numbers, I think people will see the contribution that NSS is making, and we will be able to talk share more openly in terms of the plans of NSS, including the overall revenue opportunity that we have there. Okay, all right, fine. I think finally, I'm through with my set of questions. Just one more thing that we need to discuss. Let's talk about pricing. I think you have priced your IPO at a PE ratio of 48 based on 2025 earnings post issue. So we are talking about post issue earnings. तो ये मुझे थोड़ा सा हाई लग रहा है. 48 काफी हाई हो जाता है. Especially considering the fact, okay, I'm not going to look forward in this case, but considering the fact that आपका जो revenue growth रहा है consolidated basis पे,
that has been around 8.2% according to RHP. So आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं इस टाइम में, बट इवेंचुअली प्रॉफिट्स कांट कंटिन्यू ग्रोइंग लाइक दिस अगर आपकी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो म्यूटेड है तो. सो प्राइसिंग के बारे में आप थोड़ा बताएं कि क्या रीजन रहा है इसके पीछे, क्या थॉट प्रोसेस था. Sir, I'll very quickly in 30 seconds answer the revenue part and then come to pricing. So, sir, if you see the document in June last year, so June 24, हमारा एक जर्मन पार्टनर था इन द बिजनेस जिसका इक्विटी बायबैक किया है हमने एट अ प्रमोटर लेवल, राइट. नाउ दैट कस्टमर, जो दैट जर्मन पार्टनर यूज्ड टू बी इन आवर top 3, maybe top 2 customer from a revenue contribution, right? And when we did the buyback last year, part of the buyback was that they would discontinue buying from Sudeep, so that their entire loss of revenue we've taken that one time impact in FY25. So while the core underlying business has grown, that loss of revenue has kind of offsetted the growth. So which is why you see a muted growth. But hopefully, when you see and unfortunately, you don't even have Q1 numbers of last year to compare how significantly we've grown this quarter. Exactly. But when we announce the Q2 H2 results, you should see the growth momentum in the business. Sir, on the pricing, sir, we have done extensive roadshows, as you can imagine, across India, Hong Kong, Singapore. And the valuation is a derivative of, I think, the anchor book that you saw yesterday, and the price at which all these investors felt comfortable, or how they priced the price and valued Sudeep. So maybe 5-6 months back we did a primary raise, right, where White Oak led the round. We had Nuvama and Param Capital come in, where we raised funding for the NSS acquisition. If you see, that was, I think, priced at 562 rupees a share. And today, maybe half year later, we have 563 at the lower end and 593 at the upper end. With a lot more visibility in terms of how the acquired company is getting integrated, the progress we've made in the battery materials ecosystem. So I think all in all, it was a derivative of these things plus the investors that we've met and how they've valued the companies. Okay. All right. Fair enough. Great. I think that sums it up well. So I thank you a lot, Shanil ji. Wish you all the best for the success of the IPO. It has been a great pleasure talking to you. Likewise. I wish you all the best. Thank you very much, sir. Thank you.